So what is the meaning of Pitta? Pitta means fire. We know, whether we talk about this universe, we cannot live without the fire, we cannot live without the heat. Or we talk about this body, we cannot live without the fire, and without the fire we will not able to digest the food. हम चाहे इस ब्रह्मांड की बात करें और या हम अपने शरीर की बात करें, दोनों में अग्नि की जरूरत होती है। अगर बाहर सूरज ना हो, गर्मी ना हो, तो हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। उसी प्रकार से अगर हमारे शरीर के अंदर अग्नि नहीं है तो हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, हम खाने को पचा नहीं सकते। So Pitta or the fire is very important ingredients whether we talk about the cosmos or the body. So Pitta means fire, and we can do the comparison with the cooking. So cooking, outside we are telling cooking, but when we are eating the food and then we are melting it, we are doing the digestion. So this is because of Pitta. So Pitta के कारण ही हम खाने को पचा पाते हैं, गला पाते हैं, तोड़ पाते हैं। अगर हमारे पेट में अग्नि ना हो तो हम खाने को पचा नहीं सकते। Like Pitta is doing the metabolism of the body. हम जानते हैं कि हमारे शरीर में एक अग्नि है, उस अग्नि के प्रभाव से ही हम दुबले पतले और एकदम से स्मार्ट इंटेलिजेंट रहते हैं। अगर वो अग्नि कम हो जाए तो हम ओवरवेट हो जाते हैं, हम मोटे हो जाते हैं। So if you want to digest the protein, that is called protein metabolism. If you want to digest the carbohydrate, that is called carbohydrate metabolism. If you want to digest the fat, it is called fat metabolism. So for doing the metabolism properly, we always need Pitta. हम पित्त के कारण ही प्रोटीन को पचा पाते हैं, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कर पाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को पचा पाते हैं, और हम फैट को पचा पाते हैं, फैट का मेटाबॉलिज्म कर पाते हैं। हम जो खाना खाते हैं, खाने में बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स एलिमेंट होते हैं, उनको छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ना होता है, तो वो पित्त के कारण ही संभव है। सो वट एवर वी आर ईटिंग बिगर मॉलिक्यूल्स। द मीनिंग लाइक वी आर ईटिंग द फूड, in the food we are having complex molecule of the protein, the complex molecule of the carbohydrate, the complex molecule of the fat. Then with the help of Pitta we are digesting them in the small molecules. So like when we are eating the carbohydrate, we are breaking down the carbohydrate in the small molecule, and the final product after the digestion of carbohydrate, that is glucose. So we can absorb the glucose. In the same way, we are breaking down the fat, we are breaking down the protein. So this happened because of Pitta or the fire. तो हम कुछ भी खाना खाएं, उसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ पाना, ये पित्त के कारण ही संभव है। बिना पित्त के हम बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ नहीं पाएंगे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं, शरीर उसको एब्जॉर्ब करेगा नहीं। So Pitta is very essential for maintaining the hunger. If you are not having Pitta, then you will not be hungry. अगर आपके शरीर में पित्त का अभाव हो तो आपको भूख नहीं लगेगी। और ये बात भी सच है कि अगर पित्त जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी। सो पित्त ऑल्सो responsible for the hunger, for the appetite. If you are having less Pitta, you will not be hungry. And on the other side, the high Pitta may create higher hunger. That's why it has been told the hungry Pitta means angry Pitta. If the hungry person is having more Pitta, and we know the Pitta personality is also connected with the anger. So hunger is equal to anger. तो जिन लोगों को ज्यादा भूख लगती है उनको गुस्सा भी ज्यादा आ सकता है, क्योंकि गुस्सा आना भी पित्त के कारण है और भूख लगना भी पित्त के कारण है। So whatever we are eating, it is converting in the small molecule because of the Pitta. So we have told the Pitta is the fire. The body, the heat of the body is the result of Pitta. हमारे शरीर का टेम्परेचर हमेशा एक जैसा रहता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। चाहे हम ठंडी जगह चले जाएं, चाहे हम गर्म जगह चले जाएं, हमारे शरीर का तापमान इतना ही बना रहता है। हमारी बॉडी अपने आप को हमेशा एक फिक्स तापमान में मेंटेन करके रखती है। अगर हमारा शरीर ठंडा हो जाए तो भी ठीक नहीं है, और गर्म हो जाए तो भी ठीक नहीं है। सो द ह्यूमन बॉडी हैविंग a fixed temperature all the time, 98.6 degree Fahrenheit.
So if the temperature is higher, it's not good. Even the temperature is lower, it's not good. So body is maintaining the heat because of pitta. If we are having good pitta, normal pitta, our body will be having normal heat, normal warmness. But on the other side, if we are having no pitta or the poor pitta, the body will become cold. हमारा शरीर ठंडा हो जाएगा अगर हमारे शरीर में गर्मी का अभाव है या पित्त का अभाव है. तो जिन लोगों के शरीर में पित्त का बहुत ज्यादा अभाव होता है, उनके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और उनको इनफर्टिलिटी नाम का रोग हो जाता है. So the many people are having poor pitta and the cold body and they are suffering with the infertility, impotency. हमारे शरीर की जो सेक्सुअल पावर बनाए रखने के लिए भी एक गर्मी का होना जरूरी है और गर्मी के अभाव में लोग नपुंसक हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी आ जाती है. So if you do the comparison with the acupuncture, in the acupuncture we are telling the yang energy. The yang energy is the result of pitta. If you are having poor pitta, it means your yang energy is reducing. So if you want to maintain your yang energy, you should have a good amount of pitta. अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर की yang ऊर्जा ठीक बनी रहे, तो आपका पित्त ठीक होना जरूरी है. Now on the other side, we know the light. What is light? Light is pitta. हम देखते हैं कि भाई देखो इसकी स्किन कितनी चमक रही है, इसकी स्किन पर कितना अच्छा कॉम्प्लेक्शन है. तो जो स्किन का जो ऑरा होता है, स्किन की जो साइन होती है, स्किन की जो चमक होती है, और जो यहाँ हम कहें स्किन की जो लस्टर और लाइट होती है, वो पित्त होता है. So if the person having good pitta, then the complexion of the skin will be very bright and the luster of the skin will be very good. In the absence of pitta, skin will be not giving a good light. So we can tell the skin might be dull in the person having poor pitta. So that's why pitta people looks like very like sharp and intelligent as well as beautiful. Most of the time pitta want to make the person fair and beautiful. तो जो पित्त लोग होते हैं वो देखने में भी सुंदर होते हैं. हालांकि इसका अर्थ ये नहीं कि वाता और कफा नहीं होते, हर दोष बैलेंस में होना चाहिए, लेकिन पित्त को माना गया है कि उनकी स्किन में ज्यादा ग्लो होता है. सो पित्त पर्सन हैविंग मोर ग्लो इन द स्किन. इवन द आईज आर मोर ब्राइटर इन द पित्त पीपल. अगर हम पित्त वालों की बात करें, उनकी आंखों में भी ज्यादा ब्राइटनेस होती है. दे आर हैविंग गुड साइन इन द आईज, सो दे आर हैविंग गुड like shiny eyes. So we have seen the pitta people having sharp shiny eyes, and the pitta people are more intelligent because the pit is connected with the intelligence. Even if we talk about vata personality, pitta personality, and the kapha personality, so each and every personality having vata, pitta, kapha, all three, and the pitta is responsible for intelligence in all the personality. हम चाहे वात प्रधान लोगों की बात करें या पित्त और कफ प्रधान लोगों की बात करें, पित्त होता तो सभी में है, बस बात यह है कि किसी में ज्यादा किसी में कम. तो पित्त का संबंध है हमारी इंटेलिजेंसी के साथ. एज पर आयुर्वेदा there are 5 types of pitta has been considered. So pitta can be subdivided in 5 parts. हमने पित्त को 5 भागों में बांटा है. The first pitta that is called, okay, let's make the body like this. So we can subdivide pitta in 5 parts. Let's see here. So one pitta lives in the eyes, and this pitta is responsible for the beautification of the eyes. This pitta is bringing the brightness in the eyes, and this pitta is connected with the eyes, right? So this pitta is called alochak pitta. Alochak pitta. This is the division of the pitta. Ultimately, all pitta are one, but as per the place, we have given some different name. So if the person is having good alochak pitta, will be having good eyesight. If the person having poor alochak pitta, will be suffering with the eye problem, maybe nearsightedness or the farsightedness. तो अगर पित्त बिगड़ता है तो आंखों के रोग होते हैं, नजदीक का और दूर का चश्मा आ जाता है. The second pitta who reside in the heart, and this pitta is very important, who reside in the heart, because we know the heart is the place of love. So if we want, the person want to make the love, so the real love is the result of pitta. Without the pitta, person cannot make the love. So the
person having more pitta, having more chances to make the love. Sometimes this love may be for the person, and sometimes this love may be for the divinity. So the pitta people also very meditative people. They are highly attracted toward the meditation because their heart is full of pitta, and the pitta means love. तो हृदय हमारे पित्त का स्थान है. हृदय में जो पित्त पाया जाता है, इस पित्त का नाम है साधक पित्त. So the second number pitta that resides in the heart, that is called sadhak pitta, and the person is making the love because of the sadhak pitta. So if the person is in the hatred, even this will damage the sadhak pitta, and the damaging the sadhak pitta is result in the form of heart disease. तो जब किसी का पित्त विकृत होता है तो उसे हृदय की बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि हृदय में हमारा साधक पित्त पाया जाता है. तो जो लोग साधना करते हैं उससे साधक पित्त ठीक होता है उनका. जो लोग प्यार मोहब्बत करते हैं उनका हृदय अच्छा बना रहता है, और जो लोग इसके अपोजिट इमोशन में चले जाते हैं जैसे घृणा, उनका साधक पित्त बिगड़ जाता है और उन्हें हृदय के रोग हो जाते हैं. सो एज पर द हार्ट कंसेप्ट वी नो, heart is also connected with the brain. So heart is not only connected with the heart is also the seat of mind. So if we want to see the how the mind of this people is, how the mind of this person is, we always think about the heart. जैसा हमारा हृदय होगा वैसे ही हमारा मन होगा. कई लोग हम देखते हैं कि उनका मन अलग तरह एक अजीब टाइप का होता है, मतलब कई बहुत स्वार्थी और सेल्फिश टाइप का, और एक बहुत ही अजीब टाइप का मतलब अनफेवरेबल माइंड होता है दूसरों के लिए. इसका मतलब है कि हार्ट में गड़बड़ी है. सो द पर्सन इज नॉट हैविंग गुड साधक पित्ता, also not having good mind, and the person is having good sadhak pitta, having very good mind, beautiful mind, and this types of mind is always helping to others. So mind and heart both can be considered under the sadhak pitta. So if you are having good pitta, your eyes will be good, and if you are having good pitta, your heart will be good. But if pitta is not good, if pitta is vikrat, then you will suffer with the disease of eyes and the disease of mind and the disease of heart. So let's proceed. So we have discussed two pitta. Number one, alochak pitta. Number two, sadhak pitta. Now the third pitta, that is called bhrajak pitta. Bhrajak. So bhrajak pitta is very important, and everyone want to make this pitta good because the bhrajak pitta is residing in the skin. ये हमारी स्किन में पाया जाता है, और हम जानते हैं हमारी स्किन जितनी चमकदार होगी, जितनी सुंदर होगी, उतना हमें लगता है वाओ वी आर ब्यूटीफुल. हर आप देखो कि कभी किसी की स्किन में पिगमेंटेशन हो जाए, किसी की स्किन में मुहासे हो जाए, दाने पड़ जाए, स्किन डल हो जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं. और कॉस्मेटिक की दुनिया में कितने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं, वो सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का एक ही लक्ष्य है, भ्राजक पित्ता को ठीक करना. सो ईच एंड एवरी cosmetics products are targeting the bhrajak pitta. So bhrajak pitta is the pitta. So if your pitta is good, then your bhrajak pitta will be good and your skin will be good. So if the pitta is vikrat, then the person is suffering with the various types of the skin disease, and we know there are number of skin disease. That's why when the person is doing meditation, when the person is balancing pitta, when the person is in the love, you can see even the skin will become beautiful and bright day by day without using any cosmetics. जो लोग अपने पित्त को बैलेंस रखते हैं, जो लोग ऐसा खाना खाते हैं जिससे पित्त बैलेंस हो, जो लोग हमेशा वो काम करते हैं जिससे उनके सारे पित्त बैलेंस हो, जैसे ध्यान साधना करना, प्यार मोहब्बत की दुनिया में बने रहना, उनका बिना कॉस्मेटिक यूज किए भी पित्त सुधरता जाता है, स्किन भी ब्राइट हो जाती है. सो दिस द थर्ड पित्ता विच इज कॉल्ड भ्राजक पित्ता. Now the fourth pitta who lives in the stomach, and we know stomach is the place of digestion. So that's why we are telling without the fire you cannot digest the food. खाना अग्नि से ही पचेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर पित्ता का होना जरूरी है. So pitta residing in the stomach, it is called pachak pitta, and with the help of pachak pitta we can digest the food. If your pachak pitta is good, then our digestion will be good. If our pachak pitta is not good, then digestion will not be good.
अगर हमारा पाचक पित्त ठीक है तो हमारा डाइजेशन ठीक होगा, और पाचक पित्त गड़बड़ है तो डाइजेशन बिगड़ जाएगा. So the pachak pitta is not only connected with the digestion but all the problem happening in the stomach region, like the acidity, like the indigestion, bloating, gas. These all are the result of vikrat pitta, or when the pikrata is not balanced. So pachak pitta is playing a very important role when you want to digest the food properly, when you want to feel hunger properly on the time. These all results are because of the pachak pitta. So when the person is not able to digest the food, then we are trying to increase the pachak pitta. We are giving the food which is increasing the pitta. On the other side, when someone is having too much acidity, acid regurgitation, so we are trying to reduce the pitta. So we can manipulate with the help of herbs, with the help of food. हम खाने पीने में परिवर्तन करके, हम कुछ औषधियों का प्रयोग करके पित्त को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं. तो किसी का पित्त कम हो सकता है तो भूख नहीं लगेगी, खाया पिया पचेगा नहीं, थोड़ा सा खाएगा तो पेट फूल जाएगा. और किसी का पित्त बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसको एसिडिटी होगी, खट्टी खट्टी डकारें आएंगी, पित्त ऊपर नीचे चढ़ेगा. So there is the fourth pitta and the final pitta, the fifth number pitta, which is the very important, that is called ranjak pitta. Ranjak. The meaning of ranjan, ranjak means coloring, coloring. कहते हैं कि रंजक, रंजक का मतलब है कलर करना. So this ranjak pitta who is connected with the coloring. So the work of coloring also has been given to pitta. What type of coloring? हमारे शरीर में ऐसी क्या चीज है जिसको कलरिंग करना है? So like look at here, when we are eating the food and the food is going in the stomach, then whatever is happening, wherever it is happening, finally this food is converting in the form of red blood, red blood. So this red is coloring. Okay, maybe you will tell this is because of the oxygen, this is because of something and something, but without pitta, body cannot do the coloring. बिना पित्त के शरीर कलरिंग नहीं कर सकता. तो इसका मतलब है कि अगर आपको ब्लड का निर्माण करना है, रंजक पित्ता का होना जरूरी है. When you want to form the blood, there it's mandatory to have the ranjak pitta. So ranjak pitta is responsible for forming the blood in that way. Now we can understand there are 5 types of pitta has been considered, and we should always remember these. So number 1 pitta, which has been told, I told you alochak pitta, alochak. Number 2 pitta, that is the sadhak pitta. Number 3 pitta, that I told you, bhrajak pitta. Number 4 pitta, that is pachak pitta. Number 5 pitta, that is ranjak pitta. तो ये 5 प्रकार के पित्त का वर्णन है. आलोचक पित्ता जो आंखों में होता है, साधक पित्ता जो हार्ट में होता है, भ्राजक पित्ता जो स्किन में पाया जाता है, पाचक पित्ता जो स्टमक में होता है, और रंजक पित्ता कहते हैं कि यह लिवर स्प्लीन में होता है और इसका काम है खून को रंगना, खून बनाना. So in this way, the alochak pitta residing in the eyes and maintaining the good eye health, sadhak pitta residing in the heart and maintaining the good heart and mind health, the bhrajak pitta living in the skin and maintaining the good health of the skin, pachak pitta living in the stomach and maintaining the good digestion, and the ranjak pitta living in the liver and spleen, and it is forming the blood. So in this way, now you can understand when the person is suffering with the pitta vikriti, immediately you can bring all the 5 types of pitta in your mind. So when the person is having pitta vikriti, he will be suffering from the disease of eyes, he will be suffering with the disease of heart and mind, he will be suffering with the disease of skin, he will be suffering with the disease of indigestion, acidity, and he will be suffering with the problem of the hemoglobin. तो जब भी किसी व्यक्ति को पित्त विकृत होता है, ये इन 5 प्रकार की बीमारियों से सफर कर सकता है. Then we have to think, okay, what is the real problem, whether the pitta is high or pitta is low. फिर पित्ता ज्यादा है कि कम है,
Okay, now we are having key in the Ayurveda. There are 6 types of ras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As per the Ayurveda, each and every food is having 6 rasas. हर चीज में कुछ ना कुछ रस होता है. We are having first ras, that is called sweet, or we can tell is madhur ras. The second test, which is called sour or khatta ras. The third test, which is called salty or namkeen. And the fourth test, which is called hot and pungent. तो जो गर्म चीजें होती हैं, जैसे कि गर्म और तीखी चीजें, जैसे कि मिर्ची, लहसुन, गर्म तीखी चीजें. The fifth thing that will be the bitter. Bitter means जो कड़वी चीजें होती हैं, जैसे कि करेला. And the fourth thing that will be astringent. The astringent जैसे कसैली चीजें, जैसे कि जामुन खाओ तो कैसे मुंह कसा कसा हो जाता है. So as per the Ayurveda, there are 6 rasas available in each and every type of food. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. इस ब्रह्मांड की हर एक चीज में ये 6 रस पाए जाते हैं. कुछ भी खाओ, चाहे आप चाय पियो तो भी 6 रस हैं, चाहे आप लौकी खाओ तो भी 6 रस हैं, चाहे आप वेज फूड खाओ, नॉन वेज फूड खाओ, आप whatever you are eating, whether the veg or non-veg or tea, coffee or the bottle gourd, ash gourd juice, everything having these 6 rasas. There is not a 7th number ras, only 6 rasas. Okay, so now we are having key. So we are having the list of the food having sweet rasas. We are having list of the food having salty. In that way we know each and every food is having fixed characteristic. हम जानते हैं जैसे करेला कड़वा होता है, the bitter gourd is a bitter. Okay, so in that way we know everything. Now it's very simple. Now we can increase the pitta and we can decrease the pitta. The all key in our hand. हम पित्त को बढ़ा भी सकते हैं और पित्त को घटा भी सकते हैं. हर चीज हमारे हाथ में. Just with the help of these 3, we can increase the pitta. If we want to increase the pitta, if we want to increase the appetite, take the sour food, take the salty food, and take the hot and pungent food. अगर आप खट्टा ले लो तो पित्त बढ़ा सकते हो. अगर आप नमकीन ले लो, नमक से भी पित्त बढ़ता है. और अगर आप गरम तीखा ले लो तो भी पित्त बढ़ता है. For example, you can take any sour food. We know all there are many sour foods like tamarind. It will increase the pitta. जैसे इमली खाओगे तो पित्त बढ़ेगा. और कई लोग हमने देखा है कि जब खट्टा खाते हैं तो उनको एसिडिटी हो जाती है. Why? Because the sour food is increasing the pitta, so many persons suffering with the acidity. The salty food, if you are eating too much salt, it will also increase the pitta. हम कहते हैं कि अगर किसी को ऑलरेडी ज्यादा एसिडिटी है तो कहते हैं भाई नमक कम खाओ. On the other side, the hot and pungent food like the मिर्ची खिलाओ तो पित्त बढ़ जाएगा भाई. The pepper, the orbital chili, black pepper, long pepper, ginger, गरम चीजें जैसे अदरक. तो कुल मिला के आप पित्त को बढ़ा सकते हो. Someone is telling you, oh, I'm not feeling hunger. Okay, no problem. किसी को भूख नहीं लगती है तो साउथ इंडिया में रसम बनाती है. रसम में कितना खट्टा डालते हैं और रसम पिलाओ तो भूख लगने लगेगी. In the South India, making the rasam and even the sour, and they are putting lots of sour things. Even in the pickles, we are having sourness. The pickles also having salty taste. So with the help of pickles, with the help of salty things, we can increase the pitta. तो भूख नहीं लगती है, not feeling hunger. Okay, no problem. We will give you pickle. They will ignite your fire. We will give you sour thing, tamarind. We will give you rasam. Drink it and mix with the rice and eat it. It will increase your fire, so you will able to digest the food. Okay, no problem. We will give you ginger hot and pungent. We will give you black pepper, so we will give you long pepper. So in that way we can increase the pitta. So sour, salty and hot food increasing the pitta. इनकी मदद से हम पित्त को बढ़ा सकते हैं. Many times person are coming, oh, I am feeling bloating, I cannot digest the food, please do something. So we are planning in this way. तो हम इस तरह से प्लान करते हैं कि भाई इसका पित्त बढ़ाओ. Someone is having low pitta, so we can increase in this way. Okay. On the opposite side,
Some person is having already high pitta, maybe physical, maybe mental. हो सकता है बॉडी में पित्त बढ़ गया हो सकता है दिमाग में पित्त बढ़ गया हो, है ना। दिमाग में पित्त बढ़ेगा तो गुस्सा आएगा, और बॉडी में बढ़ेगा तो ज्यादा भूख लगेगी, और भूख सहन नहीं होगी या एसिडिटी होगी. So suppose someone is having very high pitta, someone is having very high pitta, very high fire. So what is the symptoms of fire? We know the person might be suffering with the acidity. The person might be suffering burning somewhere in the body. The person might be suffering anger. Anger is also the high pitta, high fire. Person might be suffering with a red skin eruptions. एकदम से चमड़ी में लाल रंग रंग के दाने आ जाएं. So person might be suffering with the too much hunger. Okay. So the normal pitta is necessary, but too much pitta is not good. Normal पित्त होना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पित्त जरूरत से ज्यादा हो जाए वो अच्छी बात नहीं है. It's not the good thing. Then what we'll do? Okay, in this patient, now our intention, now we will reduce the pitta. So we will reduce pitta. How we are going to reduce the pitta? As now we will go to this chart. अब हम कैसे पित्त घटाएंगे? फिर से हम चार्ट में चले जाएंगे. तो हमने जो 3 रसों के द्वारा पित्त को बढ़ाया था, उसके अलावा जो बच गए वो सब पित्त को घटाने वाले हैं. So with the help of 3 rasas, second, third and fourth, we have increased the fire. Now remaining one, decreasing the fire. So the sweet is remaining, bitter is remaining, and astringent are remaining. So first one and the last 2 are responsible to reduce the pitta. तो पहला और आखिरी के 2 पित्त को घटाएंगे. तो चलिए इनको नीचे लिख लेते हैं. So first one was sweet और मधुर रस. तो पहला हमारा स्वीट है, मधुर है या मीठा है, ये पित्त को घटाएगा. And last 2, that is bitter and astringent. So the bitter means कड़वा. बिटर हम कड़वा बोलते हैं, और एस्ट्रिंजेंट मतलब कसेला बोलते हैं. सो ये तीनों के तीनों पित्त को घटाने वाले हैं. सो दीज विल रिड्यूस द पित्ता. सो दैट्स व्हाई नाउ द पर्सन इज हैविंग too much hunger, too much heat in the stomach. Then what we're telling, okay, take the cold milk. Okay, take the cold milk, and cold milk will reduce the pitta. Why the cold milk will reduce the pitta? Because milk is having sweet rasa, sweet taste. मिल्क में मीठापन होता है. शक्कर डाले बिना भी मीठापन होता है. शक्कर डालो तो मीठा आएगा, ऐसी बात नहीं है. बिना शक्कर डाले भी मीठापन होता है. As per the Ayurveda, we should take the A2 milk. A2 milk means the milk from the desi cow, and we should avoid the milk from the Jersey cow. So the desi milk is very good, and the cow milk is number 1. The cow milk is number 1 who reduce pitta. So the person is having too much hunger, it's very good to take the cold milk. If the person is having too much anger, it's good to take milk. Not only milk, the person can take raisins. Raisins are very good for the reducing the pitta. अगर आप किसी को रेजिन का सेवन कराते हो, रेजिन मीठा होता है. कितना मीठा होता है, आप खाओ तो मीठा. अगर आप कोई डायबिटीज वाला खा ले तो उसको डर लगता है कि कहीं शुगर ना बढ़ जाए, तो मिठास होती है. सो ऑल द थिंग्स which is sweet, they will decrease the pitta. Okay, तो जैसे आप मीठा मीठा खाते हो, आपको अच्छा लगता है. So when the pitta, people eating the sweet thing, they feel good, because not only they are balancing their pitta in the gut, even they are balancing the pitta in the brain. यही कारण है कि जब पित्त वालों को गुस्सा आता है तो उनको मीठी मीठी खीर खिला दो तो उनका मन और गुस्सा शांत हो जाता है. So when the pitta people are angry, you can serve them sweet kheer, so they will feel very good. Not only this sweet, even the bitter things also reducing the pitta. And we know neem is the wonderful bitter medicine, bitter herbs. हम जानते हैं कि नीम के पत्ते
कितने कड़वे होते हैं। और केवल नीम की बात नहीं है, जितनी भी कड़वी चीजें होती हैं, चाहे नीम हो या फिर कोई भी कड़वी चीज, जैसे करी लीव्स हो, करी लीव्स, जैसे कि मिंट लीव्स, राइट। सो ऑल द थिंग्स, आप एक लिस्ट बना लीजिए कि ये कड़वी कड़वी चीजें, जैसे परवल की सब्जी हम खाते हैं, द पॉइंटेड गार्ड ऑल्सो कमिंग अंडर द बिटर। इफ यू लुक एट द पॉइंटेड गार्ड, दे आर बिटर। तो परवल भी कड़वे होते हैं। तो चाहे परवल खिलाओ, करेला खिलाओ, नीम खिलाओ, ये सब पित्त को शांत करने वाले हैं। सो द पर्सन इज ईटिंग any bitter things, they are reducing the pitta. So that's why when the person is, suppose person is suffering with the red skin eruptions, अगर किसी की चमड़ी में लाल लाल रंग के दाने हो रहे हैं, हम उसको बोलते हैं चलो नीम के पत्ते का रस निकाल कर पियो, drink the juice made by neem, because neem will be the bitter, and because it's a bitter, so it is going to reduce pitta. Each and everything is going to reduce pitta. So when the person is suffering with the high pitta, when the person is suffering with the high anger, when the person is suffering with the high blood pressure also is the result of pitta. तो जब व्यक्ति को बहुत पित्त बढ़ जाता है, जब व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, और जब व्यक्ति का हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो सिर्फ आप नीम के पत्ते कुछ दिन खिलाकर उसे ठीक कर सकते हो। जस्ट बाय गिविंग द लीव्स ऑफ नीम यू कैन बैलेंस देम। और उसकी जगह अगर आप ऐसे व्यक्ति को ज्यादा गरम गरम चीजें खिलाओ, अगर आप जिसका बीपी बढ़ा है उसको बोलो नहीं नमक खाओ, खट्टा खाओ, गरम गरम खाओ, तो बीपी और बढ़ने की संभावना है। सो द पर्सन टेकिंग more hot food, salty food, again the person might get more blood pressure. Even the person will get more pitta. अगर किसी को चमड़ी में लाल लाल रंग के दाने हैं और आप उसको कहो चलो खूब नमक खाओ और खूब खट्टा खाओ, तो उसके दाने और बढ़ने की संभावना है। तो हमें ध्यान रखना होता है। So if you want to reduce the pitta, always give sweet or the bitter. And the third number, that is astringent. Astringent also very good for balancing the pitta, for reducing the fire. So with the help of sweet, bitter and astringent, we can reduce the fire. तो इनके द्वारा हम अग्नि को कम कर सकते हैं, यही कारण है। Many times person are coming to us, they are already having poor fire. So please don't give bitter things. अगर एक व्यक्ति की अग्नि पहले से ही मंद है, एक व्यक्ति पहले से दुबला पतला है, लो बीपी का शिकार है, जो खाता है वो पहले से पचता नहीं है, और आपने उसको और नीम की पत्तियां खिला दी, तो ठीक नहीं होगा। उस व्यक्ति के अंदर तो फायर बढ़ानी पड़ेगी। सो मेनी पर्सन आर ऑलरेडी हैविंग पुअर फायर, सो प्लीज डोंट डू दैट थिंग। डू नॉट ट्राई टू डिक्रीज मोर फायर। ज्यादा फायर घटाने की कोशिश मत करो। बट देन द क्वेश्चन कम्स इन द माइंड, सो what food we should take? So we should give the food as per the प्रकृति, as per the constitution. इसलिए हमें खाना व्यक्ति की प्रकृति और व्यक्ति का constitution देख के देना चाहिए। So we should give the food while looking the constitution or the prakriti, or we can do some mixing, like we will discuss how to do the mixing. Mix some spices, mix some kitchen spices, and change the quality of the food little bit to balance the rasas. तो कभी कभी ये बात आती है, तो हम घर में तो हर प्रकार के लोग रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, खाने में थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ स्पाइसेस डालते हैं और खाने के स्वरूप को बदलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द astringent. Astringent means kasela. Astringent, so many foods are having, like we can tea alum. Alum is astringent. Like blueberry is astringent. जैसे फिटकरी कसेली होती है, जैसे कि हम जामुन खाते हैं, जामुन भी कसेले होते हैं। तो जब आप कसेले चीजें खिलाते हो तो वो भी पित्त को कम करते हैं। जिसके शरीर में पित्त बड़ा हो, आप उसको जामुन खिला सकते हो, आप उसको कसेले चीजें खिला सकते हो। सो इफ द पर्सन इज हैविंग मोर पित्ता एंड सफरिंग विद द स्किन डिसीज, आपने देखा होगा कि जब सेविंग बनाते हैं, तो सेविंग बनाने के बाद फिटकरी क्यों लगाते हैं? Why we are putting the alum? Many person putting the alum after removing the hair, because if the blood is coming, then blood means pitta, and we can put the astringent thing to stop the blood, because astringent is reducing the pitta.
as well as astringent is doing the contraction of the skin. तो हम देखते हैं कि एस्ट्रिंजेंट एक तो पित्त भी कम करता है और स्किन को सिकोड़ता भी है। यही कारण है कि हम फिटकरी का प्रयोग करते हैं। सपोज वी डोंट हैव फिटकरी, देन व्हाट टू डू? ईच एंड एवरी, लाइक सी द banana is very sweet, but banana is sweet when it get ripened. जब बनाना पक जाता है तब वो स्वीट होता है, जब कच्चा होता है तो मीठा नहीं होता। So any food, any fruits which is not ripened having astringent quality in that. ऐसे कई फ्रूट हैं, कई प्रकार के फल हैं, जब वो पके नहीं होते हैं, जैसे कि चीकू, केला और ऐसे कई फ्रूट्स हैं, जब वो पके नहीं होते हैं तो उनके अंदर थोड़ा कसैलापन होता है। So that's why when the person is suffering with the bleeding anywhere, you can take any fruit which is not ripened, crush them and apply on the skin. तो जब कभी चोट लग जाए, ब्लड बहना बंद ना हो, कुछ समझ में ना आए क्या करो, तो कोई भी फल जो घर में पड़ा हो, जो पका ना हो, उसको क्रश करके लगा दो, क्योंकि जब फल पका नहीं होता है तब उसमें कसैलापन होता है, पकने के बाद मीठा हो जाता है। So when the food, that's why we are crushing the raw unripened fruits, applying on the skin. Even the person is getting rashes on the skin, we can apply the unripened fruit. एक व्यक्ति को चमड़ी में लाल रंग के दाने आ रहे हैं, क्या करो? कोई दवाई है ही नहीं, कोई बात नहीं है, घर में कोई फ्रूट पड़ा होगा जो पका नहीं होगा, उसको क्रश करके लगा दो। ध्यान रखिएगा उसमें खट्टापन नहीं होना चाहिए। द फ्रूट शुडंट बी हैव, अब कच्चे आम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं तो आपने कहा चलो कच्ची कैरी लगा दो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द sour food. Sour food are increasing the pitta in the body. So please keep the sour food in the separate category. Fine. So in this way, we can balance the disease if we know the which dosha has been increased. हम किसी भी बीमारी को बैलेंस कर सकते हैं एक बार हमें समझ में आ जाए कि आखिरकार क्या गड़बड़ है। So let's see here. So in this way, we have seen in the 5 element, in the 6 rasas, sweet, bitter, and astringent. So sweet, bitter, and astringent, they reduce fire और रिड्यूस पित्ता। तो ये 3 प्रकार के रस जब हम खाने में सेवन करते हैं, जिसमें एक है मधुर रस, मीठा, और एक है कड़वा, और एक है कसैला। ये 3 प्रकार के रस पित्त को घटाते हैं। ऑन द अदर साइड, इफ वी टॉक अबाउट द सोर फूड, salty food, and hot and pungent food, pungent ras. So these 3 rasas are increasing the fire, they increase the pitta. ये 3 प्रकार के जो रस है वो फायर को बढ़ाते हैं। इसीलिए तो हम अचार खाते हैं, ताकि फायर बढ़ जाए। और अचार हम अच्छे बैक्टीरिया को प्राप्त करने के लिए भी खाते हैं, अचार में प्रोबायोटिक्स होते हैं, उसके लिए भी खाते हैं। So in this way, now we can manipulate everything. So let's come back here. So look at here now. So now we will talk about the place of pitta. अब हम बात करेंगे कि पित्त हमारे शरीर में कहां पर पाया जाता है। Okay, so the place of pitta, it's a very important, but before that, I would like to show you this. The main seat of pitta is around the umbilicus. कि नाभि हमारे पित्त का सबसे प्रमुख स्थान है। The navel is the main seat of pitta. Umbilicus is the main seat of pitta, right? So when the person having pitta vikriti, the person is having problem
near the umbilicus. जब भी पित्त की विकृति होती है तो अम्बलाइकस के आसपास गड़बड़ हो जाती है. So look at here. So now if we see, so the main place of the pitta is umbilicus, but other than this, uske alaba, if we go on the back side of umbilicus, then we will find stomach organ and the small intestine organ. So stomach and small intestine both are very directly getting influenced with the pitta. तो जब भी किसी के स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में विकृति होती है तो हम बोलते हैं कि पित्ता विकृति. 1 minute, only 1. So अगर आपको ध्यान हो, हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि वात का सबसे प्रमुख स्थान होता है कोलॉन. We have discussed that the main seat of the vata is colon or the large intestine. So when anyone is coming with the disorder of vata, like the joint pain, arthritis, knee pain, back pain, spondylosis, any disease which is having vata condition, then we are treating the colon. आप ये समझिए कि जैसे कोई मेन ऑफिस कोलोन है वात का. फॉर एग्जाम्पल, if some terrorist is doing the wrong activity all around the India, but the main office is in the Kashmir, okay, then we will go to the Kashmir and will destroy the office of the Kashmir and will destroy the enemy from their own place, because that person is living in the Kashmir but doing the criminal activity in the each and every part of the India. तो उदाहरण के लिए कि कोई व्यक्ति कोई टेररिस्ट ग्रुप जो रहता तो कश्मीर में है लेकिन भारत के किसी भी जगह प्रांत में जाकर क्रिमिनल एक्टिविटीज करता है, तो अगर हमें उसको मिटाना है तो कश्मीर में जाके मिटाना पड़ेगा, उसका ऑफिस और उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन वहीं जाके मिटाना पड़ेगा. In the same way, the main office of the vata is a large intestine. Vata can create problem anywhere in the body. It can create shoulder pain, it can create elbow pain, it can create cervical spondylosis, it can create lumbar spondylosis, it can create knee pain, it can create too much thoughts in the minds. So vata can create many problems. वाता कुछ भी बीमारी पैदा कर सकता है. आपको कंधे का दर्द, कोहनी का दर्द, गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, घुटने का दर्द कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन इसका मेन ऑफिस कहां पर है? कोलोन में या लार्ज इंटेस्टाइन में. सो व्हेन एनीवन कमिंग टू यू with the complaint of any type of vata disorder, first you have to clear the colon, first you have to balance the large intestine. Until and unless you balance the large intestine, you will not able to treat the disease from the root. तो जब तक अगर मैं उसके मेन ऑफिस को नष्ट नहीं करूंगा तब तक मैं उस बीमारी को मिटा नहीं सकता. So if I want to destroy the disease, then I have to destroy the main office. Until and unless I will destroy the main office, I cannot work on the disease. अब किसी के कंधे में दर्द हुआ, हमने सिर्फ कंधे को देख लिया और कोलोन को इग्नोर कर दिया तो कोई बात नहीं है, वापस हमने कंधा ठीक तो कर दिया लेकिन वापस हो जाएगा कुछ समय के बाद और कहीं हो जाएगा. So we have to always focus on the main seat of the vata, and the main seat of the vata is large intestine or the colon. So in the Ayurveda it has been told, okay, do the enema, do the vasti karma. Okay, if you cannot do the vasti karma, then give some Ayurveda medicine which can cure the problem in the large intestine. Or if you don't want to give the Ayurveda medicine, give some herbs, give some detox juices, give some kitchen spices.
Ultimately, your intention should be balance the vata or any method, whether you do acupuncture, acupressure, cupping, or whatever you do. Ultimately, you have to target the colon first. तो जब भी आप वात को ठीक करना चाहते हैं, आपको कोलन को सबसे पहले टारगेट करना होगा. In the same way, if you want to balance the pitta, you have to focus on the small intestine. The main seat of the pitta is small intestine. तो इसी तरह से जब आप पित्त को ठीक करना चाहते हो, तो पित्त की जो मेन साइट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन. और बिना स्मॉल इंटेस्टाइन को ठीक किए आप पित्त को ठीक कर ही नहीं सकते. You can never treat the pitta from the root, because the main office of the pitta is small intestine. So when someone is coming in the Ayurveda, we are doing Virechan karma. Virechan karma means we are giving some medicine and person is going for a stool again and again, 10 times, 20 times, 5 times, or even 1 time. तो जब व्यक्ति को हम लूज मोशन कराते हैं, लूज मोशन यानी पर्पजफुली कराते हैं, तो उसे हम विरेचन कर्म कहते हैं. हम किसी को 1-2 बार कराते हैं, किसी को 5-10 बार कराते हैं, किसी को 20 बार भी कराते हैं. जितना पित्ता उतना मोशन, और व्यक्ति के बल के अनुसार कि भाई ये 10 बार सहन कर सकता है. लेकिन अगर आपने एक बार भी उसका पेट साफ करा दिया तो पित्त कम हो जाता है. Even you are inducing the single time and the person is going single time for the motion, the person will be having good feeling in the pitta. Suppose someone having red eruption on the skin, so induce the motion, then person will get good feeling in the skin. अगर किसी को स्किन में इरप्शंस हो रहे हैं या किसी का हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, कोई भी बीमारी पित्त के कारण से हुई है, आप उसके स्मॉल इंटेस्टाइन को बैलेंस करो. अब कैसे भी करो, चाहे आप पॉइंट लगा के करो, चाहे आप कुछ औषधियां खिला के करो, आप किसी भी माध्यम से अगर उसके स्मॉल इंटेस्टाइन को बैलेंस कर देते हो तो उसका पित्त कम हो जाता है. सो द मेन सीट ऑफ द पित्ता इज स्मॉल इंटेस्टाइन. इन द सेम वे द मेन सीट ऑफ कफा, कफा लिव्स इन द चेस्ट कैविटी. कफ का जो मुख्य स्थान है वो छाती है. तो जब तक अगर आपको कफ बैलेंस करना है, नाउ द मेन सीट ऑफ द कफा विल बी चेस्ट. The disease might be happen anywhere. The kapha disease might be happen in the brain, then brain will become dull. The kapha will be more in the leg, then leg will be heavy, don't want to move. There might be swelling in the knee. Kapha means swelling, kapha means retention, kapha means become bulky. कफ का मतलब है सूजन आना, रिटेंशन हो जाना, बल्कि हो जाना. घुटने में सूजन आ गई, एंकल जॉइंट में सूजन आ गई, पैर भारी हो गए, चल ही नहीं पा रहे हैं, हाथ भारी हो गया, उठ नहीं पा रहा है, तो इनएक्टिविटी इज कफा. नॉट डूइंग फंक्शन एक्शन, दैट इज कफा. डलनेस इज कफा. ओके, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, दैट इज कफा. कफा मींस स्टेबल. कफा मींस स्टेबल, यू डोंट वांट टू मूव एनीथिंग. जैसे कहीं जाम लग गया, कफ का मतलब वो है. सो द मेन सीट ऑफ द कफा विल बी चेस्ट कैविटी. सो इफ यू वांट टू ट्रीट द कफा, until and unless you clear the chest, you cannot treat the kapha. जब तक आप छाती को हल्का ना करो, आप कफ को ठीक नहीं कर सकते हो. सो राइट नाउ आवर मेन इंटेंशन इज पित्ता. अभी हम मुख्य रूप से पित्त की बात कर रहे हैं, तो पित्त के बारे में ध्यान रखिएगा कि पित्त को अगर संतुलित करना है तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन को बैलेंस करना होगा. आप स्मॉल इंटेस्टाइन की पॉइंट लगा के कर सकते हो. वी नो there are many points in the small intestine. They are treating the liver, they are treating the spleen, they are treating the multiple part of the digestive tract. तो जब हम लिवर को ठीक करते हैं, स्प्लीन को ठीक करते हैं, तो हम ये मिडिल पार्ट को, स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास के पार्ट को ठीक कर सकते हैं. सो लेट्स सी दिस चार्ट वंस अगेन. लुक इट हियर. So in this way, so first we can consider the navel region, and the second is stomach and small intestine. पेट और स्मॉल इंटेस्टाइन पित्त की मुख्य सीट है. नाउ द स्वेट, पसीना निकलना. पसीना यानी स्वेट also the place of pitta. The more sweat, it means you are having more pitta in the body. The lesser sweat it means you are having lesser pitta in the body. So the pitta also resides in the form of sweat. स्वेद ग्रंथियों में भी पित्त विराजमान है.
तो जैसे पित्त बढ़ता है पसीना निकलता है, और पित्त कम हो जाता है तो पसीना भी कम हो जाता है, और कभी कभी तो बंद भी हो जाता है। सो देयर शुड बी मोर स्वेट, दैट्स व्हाई द पित्ता पीपल आर मोर फेयर। आपने देखा होगा कंपैरेटिवली जो पित्त प्रधान लोग होते हैं उनको ज्यादा ये जो स्किन पर दाग धब्बे नहीं पड़ते। उनको क्यों नहीं पड़ते? पढ़ सकते हैं लेकिन कंपैरेटिवली नहीं पढ़ते, क्योंकि पसीने से उनकी स्किन की शुद्धि हो जाती है। द पित्ता पीपल आर सफरिंग लेस देन द अदर पर्सनैलिटी। पित्ता पीपल आर फेयर। व्हाई दे आर फेयर? बिकॉज पित्ता रिसाइड्स इन द स्वेट ग्लैंड्स एंड इट्स डूइंग द वॉशिंग एंड वाथिंग ऑफ द स्किन। ये स्किन की सफाई कर देता है। जरा सा काम करेंगे पसीना निकल जाएगा, सफाई हो जाएगी। So I am not telling it's a good. Sometimes even it's not good. The excess sweating is not good. If the person is sweating a lot, it's not the good sign. But if the person is not sweating at all, it's also not the good sign. So as per the quality of pitta, the pitta people are fair. Fairer पित्त लोगों को फेयर कहा गया है। और क्यों कहा गया है? क्योंकि पित्त हमारी लिंग, पित्त कहां पर विराजमान है? पित्त विराजमान है श्वेत ग्रंथियों के अंदर।